Hi, good morning. How are you? Absolutely fine. आप कैसे हो? I hope network will stay safe because of heavy rainfall. ओके यू हैव अ रेनफॉल देयर हम लोगों के यहाँ 2 दिन से थोड़ा मौसम खुला हुआ है. नहीं, हमारे तो कल बहुत भयंकर बारिश हुई. So ओके अभी भी it's cloudy outside. So हाउ वाज योर ऑफलाइन बुक लॉन्च इवेंट. perfectly fine. It was really, not grand but great. Yes. Didn't you see the pictures? I've sent it Yes, to you Pushpinder yes Singh. you have even sent us the message over the WhatsApp that the event was so successful. अच्छा रहा event and photos Yes, I yes. saw पुष्पेन showed में आप. So, perfectly, like definitely आपका first book and you have got like very good response in the pre-order itself. You have fetched a many good orders. It's really very impressive क्योंकि first Yeah, time yeah. I'm author really के लिए. surprised. Hmm, Maybe the experience worked. definitely ma'am, you are in the industry from last many years and that really counts if you are Yes, coming up with the book. आपके लिए अच्छा ये रहा कि being a first absolutely. time author what happens is like आपको ऑडियंस या रीडर बनाने के लिए बाद में ज़्यादा हासिल नहीं करना पड़ा. आपके पास रीडर बेस एक ऑलरेडी पहले था. Right. बिल्कुल. सो ये कहना गलत होगा कि स्ट्रगल नहीं करना पड़ा. वो तो डेफिनेटली बैक एंड स्टोरी है. यस एग्जैक्टली. बट हाँ, डेफिनेटली कंपैरेटिवली मुझे लगता है कम करना पड़ा यस कंपैरेटिवली. जैसे हम लोगों के यहाँ पे सो टीचर्स की बुक आती है तो इट्स देयर कि हाँ उनके स्टूडेंट्स एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रीडर बेस ऑलरेडी रहता है. लेकिन नए ऑथर के लिए तो इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग. वो पूरा हार्ड वर्क करके बुक लिख लेता है एंड देन ही हैज़ टू फाइंड द रीडर्स ऑफ द बुक. तो एक कंपैरेटिवली एक इजी हो जाता है प्रोसेस. बिल्कुल सही. और मैं आगे किसी को हंस रही थी कि अनलेस एंड अंटिल यू डोंट ट्रेवल द जर्नी यू डोंट अंडरस्टैंड द पेन. एग्जैक्टली. तो राइटिंग अ बुक इज वी एज कंप्लीटली एन डिफिकल्ट. Yes, yes, yes. We as an audience एक मिनट में पिक्चर को, मूवी को या बुक को रिजेक्ट कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि उसके पीछे इतना ह्यूज हार्डवर्क रहता है. एग्जैक्टली. और कोई भी ऑथर या कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर व्हेन दे डू और मेक समथिंग ऑब्वियसली उनका मे बी इंटेंशन गलत नहीं होता बट कभी कभी मार्केटिंग गलत हो जाती है, कभी कभी डिस्प्ले गलत हो जाता है. And if everything बट works, हार्ड then वर्क. there is the luck. If everything यस, is यस. right, then the luck matters. I know because like I'm pursuing my PhD and writing a like I'm just writing a thesis, which is which already took 4 years and it's still in the submission stage. कि guide अभी भी accept नहीं कर रही है उसको. So I can understand कि book लिखना completely and very good thing is कि आप एक एक्चुअली बहुत अच्छे इशू पे बुक लेके आए हैं विच इज़ नीड ऑफ द आर. हम लोग हर जगह ही देखते हैं पीपल आर मेंटली फीलिंग अपसेट. कहीं ना कहीं दिक्कत हर किसी के उसमें है ही है. स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी ही रहे हैं. So the book is really very beautiful and the way you have written the illustrations you have created, everything is completely appropriate, I would say. Yeah. So yes, absolutely, because for many international companies as an editor and as an English trainer. So I think for writing experience was a brush up. So उस brush up ने जो basics हैं उसमें काफी help करा. But honestly speaking, writing book is entirely different story. Exactly, ma'am. Like everybody wants to write a book, but only 10% of the people end up doing it. So, like, you have actually completed it. It's a very first accomplishment in itself. True, true. I just want to share one thing. Like I was just 18 actually. Okay. Back in my mind, I always thought of being a writer. So वो इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं शांत होती गई बिकॉज बहुत सारे स्कूलों के बच्चे मेरे से डिबेट्स लिखवाने आते थे. आई हैव रिटन लॉट ऑफ पोएम्स. तो कॉलेज में एक बहुत अच्छा स्टेज का प्लेटफॉर्म मिल गया. तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव एबिलिटी किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस होती गई. और
मुझे लगा कि ऑलमोस्ट 19 से लेके 48 में बुक पब्लिश हुई है, तो इतने सालों के बीच में मतलब आई वाज इंटायरली कॉन्फिडेंट इनसाइड, यू नो दैट्स अ ट्रूथ। मुझे लगा या प्लीज़ एसी ऑन कर दो यहाँ पे। 4 years बैक। और जो था किसी किताब का, उसका नाम था काशी टू काशी। और वो किताब मैंने आधी लिख के आई वाज टोटली ब्लैंक, और मुझे समझ नहीं लग रहा था कि क्या करना है। द फ्रस्ट्रेशन केम एंड आई गेव अप, टू बी ऑनेस्ट। बीच में गेव अप कर दिया कि नहीं, ये काशी टू काशी तो अड़ गई है बीच में। और फिर एक साल हाथ नहीं लगाया, और फिर सडनली यू नो इन 2020 I was just sleeping. It's a true incident. And I saw a dream. And in dream, I saw a mirror. And suddenly something reflect, and the name reflected first, two sides of the mirror. ये बहुत ड्रामेटिक लगेगा सुनने में, बट इट्स अ ट्रूथ मैम कि बेसिकली द इंस्टिंक्ट इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि किसी चीज़ को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। हम अगर कुछ सोच के एब्सोल्युटली, करें तो इट मे नॉट वर्क इट इन अ वे वी वांटेड टू, बट इंस्टिंक्ट एक अलग ही चीज़ होती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और उसके बाद टाइटल आ गया, उसके बाद समझ नहीं लग रहा था कि टू साइड ऑफ मिरर है क्या, अब इसमें डालना क्या है। सो बुक में एक चैप्टर भी है जहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि व्हाई आई डिसाइडेड टू राइट अ बुक। ओके। सो मुझे लगा कि यस, मैं काशी टू काशी लेटर लिखूंगी, वो पेंडिंग में है। और एक और बहुत सुंदर प्लॉट था, उन तीनों प्लॉट्स में से ये प्लॉट नंबर 3 था, जिसको मैंने नंबर 1 पे स्टार्ट किया। ओके। सो ये अपने आप में एक बहुत ही मेस्मराइजिंग लर्निंग जर्नी ऑफ 18 मंथ्स रही है। और अब मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा एक कोर्स लॉन्च कर सकती हूँ, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ऑथर। मैम डेफिनेटली आप करना चाहिए बिकॉज दिस विल हेल्प द नर्चरिंग माइंड्स जो एक्चुअली करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली वी कैन गो इट फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड नॉमिनल अमाउंट ऑफ चार्जेस। लेकिन एक नए ऑथर्स को जो करना चाहते हैं उनके दिमाग में है एंड बीइंग व्हाट यू कैन से आप इस फील्ड में हैं, आपके साथ इतने स्टूडेंट्स हैं एंड इफ द एनीवन हु इज स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ, एक लिखना सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। दे फेड आउट देयर एंजाइटी फॉर सम टाइम। वो लिखेंगे तो आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं सॉल्व हो जाती है किसी की। बात आजकल के टाइम में दिक्कत ये है कि लोग बोलते नहीं है, दे फील इट इनसाइड, दे कीप ऑन गेटिंग इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेशन वहीं जाता है। इफ दे can't share with anyone, at least they can write down and share in their internal pages. शेयर करना वर्ल्ड के साथ अलग बात है। एब्सोल्युटली, सो मैम एब्सोल्युटली। शैल वी और मुझे लगता स्टार्ट। है राइटिंग अ बुक, हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ मैम प्लीज़। यस 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 एब्सोल्युटली। सो आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट मेरे लिए राइटिंग बुक और ऑनलाइन यू नो ट्रेनिंग जर्नी ऑलमोस्ट सेम है। क्योंकि इन 2008 व्हेन आई स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग माई सेल्फ एज एन इंटरनेशनल ट्रेनर, the road was totally blank to me. I had no idea when to start, where to start. It randomly started. मेरे साथ बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए ऑनलाइन, और मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। और 2012 तक मैं दो इंटरनेशनल कंपनीज में एज अ ट्रेनर काम कर रही थी। और उसके बाद 2013 में आई लॉन्च्ड अ कोर्स, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल ऑनलाइन ट्रेनर। और सेम स्टोरी हैपेंड विद द बुक राइटिंग। I struggled a lot, and those are the things which I will share to new authors, that how you have to be very careful. आपको लोग बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स देंगे, आपको लोग बहुत सारी सिली चीज़ों के लिए ट्रैक्ट करेंगे। और जब आप कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इंटेलेक्ट एक तरफ हो जाता है, लालच थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। सो यू फॉलो अदर पर्सन जस्ट बिकॉज यू वांट डू समथिंग। सो आई थिंक अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी और की मेहनत में थोड़ी कमी आती है या उसको एक राइट गाइडेंस मिलती है, सो बीइंग अ राइट ब्रेनर आई एम ऑलवेज रेडी टू शेयर दैट। चलिए मैम वी शुड स्टार्ट नाउ। लोग आते रहेंगे, वी विल एक्सेप्ट देयर रिक्वेस्ट्स एंड hello everyone, good afternoon all. Welcome to the book launch of Two Sides of Mirror. For those who don't know me, I'm Rani Sharma, co-founder of Wisdom Words Publishing and MC for the today's session. We are here today to celebrate our author and her wonderful book Two Sides of Mirror. Congratulations ma'am, and we are wishing you a wonderful writing journey ahead.
after this book also. So this book is really pretty amazing, and the publishing journey with her was also really very awesome. You can get her book on Amazon, Flipkart, or directly by ordering to our company, publishing house itself. We are leaving the link in the chat box for the Amazon, Flipkart. So please kindly help yourself with ordering this book. We are now going to hear from the author itself, have a little interview, Q&A session, and yes, she will also be reading for us a beautiful paragraph from the book. Please keep in mind that we'll be recording the session and taking the photos of the screen as well. So let's in fact take a very first picture of the session while we are waiting for others to follow up, and we'll take the photo throughout the session. So this will be our very first photograph of the session, and I'm allowing my team to please take a screenshot of the event and requesting you all to have a big smile on your face and say a cheers. Yes, cheers. Thank you, ma'am, and thank you everyone for coming here and for the ma'am to celebrate this milestone and journey. Yeah. Thank you. Cool Thank you, and all yes. of you who are present here. Minu, I want a smile. Sorry. Yes. Thank you, Leela. Can you on your video for 2 minutes? It would be my pleasure. So we can have a good picture. And after that, if you're not comfortable, you can off your videos. Yes. Chaliye. Yes. Thank you, Seema ji, Leela ji, Rohini ji, Aparna ji. We are waiting for all of you to just have a 1 minute of your presence on a video call. So just we can take a one screenshot of the wonderful evening that will be there ahead, a wonderful session that is waiting for all of us to be happening. Thank you. Many thanks for being here and taking out the time from your busy schedule and cheering and celebrating this milestone for Seema ma'am and for our publishing company. Now we are actually proceeding with the program. In case if you have any question, you can please drop them in the chat box. Please feel free to ask question and drop your messages. We'll be paying attention to those as well at the time of Q&A session in the later program. Beside this, at the end of the event, we will also be having the open discussions. We will be very open to discuss and ask anything to the author itself. Now, before introducing Seema, I want to say a few words about how big of an accomplishment it is to write a book. Everyone wants to write a book, but only few of them end up doing it. So she actually did it. Without further ado, I would like to introduce you all to Seema. So her life journey started as a teacher, trainer, and then the founder of Seema, the Pathfinder, and mentor of the Midna Achievers. And the journey of being Seema includes many inspiring and breathtaking experiences, a long and inspiring journey of teaching IELTS and PT, counseling for careers, teens, and parents. Midna nurturing young minds, and giving a helping hand to people struggling with anxiety, depression, or any mental illness. He was seriously an inspiration for all. The exposure to the world of challenges and opportunities was difficult, but conquering all of it made her the founder of the Pathfinder Academy, a platform for many young talents in the country and opportunity for people to get perfect grooming in life. Seema is on a mission to make the world really and fully self reliant about stress free education, life, and the right career guidance. The children and people guided by Seema are living a successful and contemplative life. Such an impressive and powerful personality to know. Without further ado, I would like to introduce you to her. Before that, let's put yourself off the mute for just one quick second and give her a warm welcome and put them everyone on a mute again.
It's good to see so many happy faces together. Thank you, guys. Let's introduce Seema ji, and ma'am, I would like you to tell audience and the participants, introduce yourself about how you have came to this book, what was the idea behind this book, how much time it actually took to complete it, and many other such interesting things behind the scenes that you want your audience and readers to know. So, well, uh, as already introduction is done, I'm Seema Kamaljeet Singh. And it's been almost more than 2 decades that I have been into the field of training, education, mentoring, coaching, Please AC start. counseling. And a lot of people, those who are very close to me, they know that there was always a writer inside me since I was a child. Someone is smiling and laughing. She knew very well that when we were in college, they used to simply come up with an idea. हमारे लिए कविता लिखो, पेड़ के नीचे बैठो, this is a theme, अभी कविता लिखो. So that time you are not mature actually. You do not understand your abilities. You take it as a fun part. Meenu Gupta is sitting here, and every time in our Punjabi lecture room, we both used to sit at the back end, and we used to write a lot of poems. And we still want to find that book. We can publish that too. So later, चला रहे हो क्या ऐसे? I started feeling a recognition because my one of lecturer, she gave me a lot of opportunity on stage to express myself. So through debates and through one act plays and through a lot of exposure on stage, maybe that instinct of expression was satisfying somewhere. So later, when I started teaching again, इसका नेट गया, इसकी एडिटर भी नहीं आई है अभी तक, कवर डिज़ाइनर भी नहीं आई इसकी अभी तक, ऐसे कैसे होगा? I'm so sorry. There is some internet connection because of heavy rain. So I hope you all will adjust. So, लेकिन पता नहीं था लिखनी कैसे है. So when I was 33, I started with the book called Kashi to Kashi. I've written few pages and then I was lost. I got frustrated and I just kept it aside. I'm always a very strong feministic, and that was the vision behind Kashi to Kashi. Later, I was so occupied in my livelihood, earning and maintaining and developing my academy. Honestly speaking, I was not getting time to write a book. In between, I got a few opportunities internationally where I help people to write and edit their books. So I got some brush up, I got some ideas, डिज़ाइनर है ये and वाला। fortunate enough that I was working for an international tutor com company where I was teaching IB children for story writing. So that again brushed up my इसका स्क्रीन skills देना, फोटो ले that लेना। yes, these are the few things which are needed for the book writing. So long time back, as I stated in 2020, a dream came. As I already stated, it sounds so dramatic, but actually it happened. I was sleeping and I saw a mirror, and suddenly I saw a title, two sides of the mirror. And I was running mad that what exactly it means. So for a month, I wrote this title or number of places here and there. So I could, just churn up an idea that what exactly it means, but how it happened and transformed into a book is correlated with an incident. I met with a girl, 25 years old, very smart, और बहुत educated, glamorous. For outer world, it was a very fantastic picture. This is what we all pretend to. And somewhere I realized when she came for the counseling, the darker side of her mind. And I was so astonished to know that despite being so qualified and from such a good family, reputation family, uh,
she never got the guts to take step in for the counseling help. So her story shook me inside and I thought कि बहुत सारे लोग पहला कदम ही नहीं उठा पाते. मे बी इट्स जैसे कि मैंने बुक में भी लिखा, इट्स लाइक अ फ्लू. मुझे कोल्ड हो गया, अगर मैंने कोल्ड की दवाई सही टाइम पे नहीं खाई तो मेरा कोल्ड बिगड़ जाएगा और हो सकता है मुझे टाइफाइड या निमोनिया भी हो जाए. तो सेम स्टोरी हैपेंस विद मेंटल स्ट्रेस, लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर. और जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, it is not confined and related to one particular age group. The sad story is I have children of age 7 going into depression. So मुझे लगा कि हर बंदा अगर इंसान काउंसलर तक नहीं पहुंच पा रहा तो कुछ लिखते हैं. तो आप यकीन नहीं करेंगे, पहले ये किताब was a typical counseling book, and when I finished it in back end of 2021, when I read it myself as my own critics, I didn't like it. I thought it's like other counseling book where a lot of suggestions are there, but people do not relate with suggestion. They rather relate more with stories. For example, अगर हम अपने बचपन में जाएं, I'm pretty sure all of you can remember one or the two story which your mother or your grandmother used to narrate you, और suddenly हमें life lesson के तौर पे वो story याद आ जाती और वो हमें morality में या बहुत सारे life decision में help करती है. So I feel stories are more correlated. So I started the editing at the start of year 2022 and transformed the whole book into the fiction. But actually it is not a fiction, as I've already stated. These are the life lessons which I've learned from real stories. But to keep the my client's privacy, I try to add some dramatic effects. And another part was, the one incident was not applicable to one person. Same story, same problem, maybe हो सकता है मैंने 10 या 20 25 30 लोगों में देखी हो. So that is why it is not subjective. It has become an objective problem for me. And I've tried to cover all the age groups. When you will read the story, you will see a very small child. The next story is of a little older one. The next is of a teenage. Then the adults. Then somebody who is, facing the last shade of the life, that is old age. So I think every story anyone can relate easily. So it took almost 18 months. So it's like giving a birth to two babies, 9 into 9. So for me, these are my two babies. I've given birth as a part of this book. So yes, this is how it started. It's really a very impressive to hear from you, and very detailed, very minute things that nobody would love to share. But being in the author interview, rather talking about the book, अगर हम incidents की बात करते हैं, it will make it more engaging and love to hear from you, क्योंकि book तो हम आपकी पढ़ लेंगे. These stories will be good if we hear, and all the participant will hear from your mouth. चलिए. Absolutely. Thank you, Seema ma'am. Now, I think your editor is here, right? He's in the Yes, session. yes, she's there. So, Yes. okay. So, behind a book and a great book, there is a prominent role of an editor. So, now we all want to know and hear from the editor of this book. Please welcome Joshita Singh and Ruchika Surekha. Can we please have them on the screen? Ma'am, Ruchika is not available. His dad is going through surgery. No issues. So Joshita will accompany us. Yes. Joshita, I welcome you. Please be here on the screen and please share your experience working on this project and something that you want to share with everyone from this book. And Joshita, you are really free. You can have a conversation in Hindi or English. We are very open. So please share your experience about working on this project and something जो आप चाहते हैं कि हमारे audience and participants को क्या इस book से benefit होगा and why will everyone enjoy this? All right. First of all, a very warm afternoon to everybody here. Thank you so much for joining this because this has been a beautiful milestone in both Seema ma'am's and my life. Because I have been an avid reader since I have been 6 years old, and working on a book has been a dream for me. And when I finally got a chance to do that on a book of a person I loved so much, it was honestly an incredible experience. I have had so much flexibility working with Seema ma'am. She gives the editors the space they need to bring their ideas to life. Because obviously, if you restrict an editor to
like put forward their ideas, the book gets confined to only the author's ideas. And it's not that the author's ideas are not good enough, but they need some shaping. Because I know how much Seema ma'am was troubled to find an author. It took her nearly 6 to 7 months. No one was able to capture the exact essence of the book, the exact shape that she wanted to give to the book. And when she finally found me and Shobidi, I think she was just very happy. And that experience was something worth learning for us. This book I thought would take me a long time to edit. And believe me, I am not exaggerating. I finished it in 3 hours because it was so binding that I kept wanting to read more, not just as an editor, but as a reader as well. I think there were a lot of times when she really helped us in a few things, and she was very supportive throughout the entire journey. The hardest part of being the editor, I think, being with Seema ma'am, there was no as thing as such because she was just so reliable and she gave us absolute freedom, like I've already mentioned. The book has beautiful, beautiful strands, and it is helping everyone. Like Seema ma'am has already mentioned, there are several stories. Talking about my favorite story, this may seem a bit odd, but there's this one story named as the sand slipping out of our hands. So I'm going to give you guys a bit of sneak peek into that story. It's basically how we live our entire lives and we forget to cherish the small moments. And then when we are at the last strand of life, we actually look back and there's so many things that we have missed. Being a teenager, I do think it seems a bit odd that me liking the story which is on the last stage of life. But I think it makes a lot of sense because being a teenager, I just get relied by so many things. I am doing studies, I have so many things to juggle. So in there, I think I forget living sometimes. I am studying, I am doing this, that. I can show things on my certificates. But the one thing nobody shows on your certificates is how much you live, how much you've actually enjoyed in life. And that's the thing which has actually mattered the most. Absolutely wonderful, Joshita, and definitely in India, complete focus is on their studies, and people are like parents are focusing more on their degrees, certificates, and accomplishments. But mental illness and living is the most important thing that the parents should definitely focus on. And yes, I can proudly say that the situation is now comparatively different as we were there in the last 10 years. So it's really wonderful, Joshita, to have you here in the interview. And being a teen, you have shared your experience. Thank you so much for sharing a detailed and Thank you. delightful insight. Now, the another important person that plays a very important role in a book publishing is the cover designer. A cover designer is really an important element because a cover is one thing that attracts the eyeball of all the readers. So here we want to welcome Sharubani Patra and Palika Arora for sharing their experience, how they personally want to explain the idea behind this book cover. And I welcome you now. Palika ji is here. I can see you. I think Sharubani is there or Sharvini is having her exam, and one thing I would like to share: yes. uh, everybody who is, for the book contribution responsible, they are all teenagers. I've given the chance to everybody as a Wonderful. part of their internship because I remember and I've experienced that young talents have huge to explore and to give to the world, but sometimes they don't get the right track. Exactly. सो पूरे इस किताब के दरमियान मैंने कलकत्ता के बिल्कुल रिमोट एरिया से शॉर्बनी को हायर किया और बिहार के पूर्णिया जिले की एक छोटी सी लड़की है रुचिका, जो मेरी सेकंड एडिटर है, और तीसरी जो बहुत यंग टैलेंट है मेरी अपनी बेटी, बट उसको ये इंटर्नशिप उसकी क्वालिटेटिव नॉलेज के बेस पे मिली है, ना कि सिर्फ इस बेस पे कि क्या वो मेरी बात है। बेटी है। और पलिका मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और मीनू दोनों ही प्रेजेंट हैं। मीनू ने मेरा ऑथर इंट्रोडक्शन लिखा है, और पलिका ने इतनी मेहनत करी है कि मैं इनका शुक्रिया मुझे लगता है करूंगी तो मुझे मार पड़ जाएगी, बट जितना मैंने इनका दिमाग चाटा है। आई थिंक शुक्रिया You वाला have this, थोड़ा huh? सोच Yes. के थोड़ा यस मीनू, यू से सेड समथिंग। आई एम सेइंग कि शुक्रिया वाला पार्ट थोड़ा सोच के बाद में भी डील करना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आई एम सो पर्टिकुलर एंड बीइंग अ बेस्टी, सिंस चाइल्डहुड शी न्यू मी वेरी वेल कि इफ आई एम स्टक टू सम आइडिया, तो जब तक वो एग्जैक्टली वैसा नहीं होगा,
आई विल नॉट गिव अप। तो हम लोग रात को 10-10 बजे, 12-12 बजे, हम क्योंकि हम दोनों ही प्रोफेशनल हैं, तो किस तरह से हम लोग फाइट करते थे एक दूसरे के साथ, ये अच्छा नहीं है, ये वो है ही नहीं जो मैंने सोचा था। तो प्लीज पलिका, ऑल योर्स। And I would like to show you the beautiful cover that the Palika and Sharvani has made. It's seriously very beautiful, Palika. Very really impressive. It really gives the idea कि इस book के अंदर क्या होगा. Now, please share and explain the idea behind this book cover at the very A very first. warm afternoon to all of you. I believe while designing, of course, we had a session with Seema, but the idea behind design was ki if you take life, everything in life has two sides. But the second one is that you create and you allow your thoughts and actions and decisions of others, which actually take you in a negative way, in a cyclic way, they keep repeating on your mind. So the cover is designed based on this thing only, that from dark, how will you travel from those dark thoughts to the positivity? You have to, fight with yourself. And coming out, you can always seek help. But that's the book going through. But the cover should tell you from itself in the beginning only. When you look at the book, it shows you that there is darkness in life which keeps on, hindering us, and it takes us towards light. If we take one step towards light, light is not very far off. So that was the main idea. The whole concept was to traveling from darkness to lightness. Thank you, Palika. My next question for you is, how is your journey with Seema? Is working with her was difficult to like absorb, what it was just flawless and smooth going on? Very flawless. I don't have to give a second thought of working with her also. All I say is she gives you freedom. She doesn't restrict you. And she's taught me, or we've experienced something together, is that believe in yourself and you're braver than you think. And more talented than you know and capable of more than you can imagine. This is what how we make our imaginations fly. There is no pause to it. Just go on. And I know it will come automatically away. So that's how our journey is together. I would like to add up here, both of my bestie Meenu and Palika, they are highly talented, great artists. And when it comes to art, I am totally blank. So I knew that only they can understand what I wanted to portray, because I have words as a creative expression, and they have hands to create the expression. In a way, we know each other so well that I can read her mind, that what is going on in her mind, and I can just do it. Yes. It's just that way. It goes on that way. So this is a picture. It She created it in 5 minutes only. I just narrated my thoughts, and there is one more picture. We fighted a lot on that, because when she was satisfied, I wasn't. When I was satisfied, she wasn't. So even when the book went for publishing, we were still discussing, can we change? I was just asking, can we change? Can we do something else? She said, just shut up, okay? So I believe when you're working with people, not just because they are my besties, anybody with whom you are open, anybody who is able to understand your expression, I think you are always comfortable, and then the best thing automatically comes. Definitely. It's just not about the book cover, but in any phase, the one who understand will आपका कुछ भी हो वो काम easy हो जाता है, whether it's about our personal problems or anything. If you are able to read the author's mind, you are able to grab what author is trying to. It is very easy to illustrate it. Then it becomes very easy. Exactly. Uh, if I'm not wrong, we have a lot of questions. Can we just go and see? Yes, definitely. We have these. We like our team is completely monitoring these questions, and we'll All have right. a Q&A session for this. All right. Now, All right. thank you, Palika, for being here. Getting back to Seema now and inviting her again to share with us an excerpt from the book. And I know you all will going to enjoy reading her directly from the book. So, Seema, you are up. Kindly read the most important and something which you think your reader and our participant for the session will love the most from this book.
though every word is from the soul, so it's all my children. But I will read a poem first because this is the most tragic part which has pushed me to write a book. And I'll give a background. Unfortunately, everything is happening very fast in our life. Our life has stages, everything has a process, everything has steps. And if you miss a step, I'll give a very simple example of curry making. If you're making a curry and if you're not following the step, you are spoiling your curry. But look at the life, what you are doing, you are missing lots of steps. And unfortunate tragedy is starting with the youngsters first. एक छोटा सा बच्चा 7 साल की उम्र के बाद टीनेज में जाता ही नहीं, वो सीधा एडल्ट हो रहा है. तो उस एडल्टहुड होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस लेटर लाइफ में आते हैं, मैरिड लाइफ में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं. ऐसे बहुत सारे केसेस को आई जस्ट ट्राई टू पोर्ट्रे अप इन अ पोम. इट्स अ वेरी सिंपल पोम, बट इफ यू विल फील इट, every word will show you the pain. So that's why I've given the title Diary of Unknown But Many, because this is not a story of one particular child. This is endless. Let's once make life a plain blank sheet so that I cannot get any heat. No rough patches, no more cheat, cause I do not want more heat. Is it easy to do so? I have wasted my 10 years to do so. I tried many times, but somehow something pops up and it shatters all. No worries. I will try to make it happen, and I know a day will come. I thought I have all money, friends, a big car. What else desire a person so far? I had a crush when I was just a teen. I had a crush when I was just a teen. I felt like a queen, but its consequences were unseen. It was my first broken heart. I never thought it will become my regular part. To heal the pain and to show the world, I am cool. I had made myself a great fool. My second star entered my life like a war, and I was sure my dream world is not so far. Who thought it will again only be a tar? With pain and heavy heart, I found a hookah bar, and I thought this will surely make me feel like a star. However, it gave me more wounds and scars, and I thought I can try again hookah bar. Yet it was empty, hollow, and inside a deep, dark war. The emptiness inside was draining me. Next day, when I got up, it was all silent, and life had no spark. I felt someone has not only stolen my heart, and suddenly I recalled all my life's chart. Days and months passed. I could not find a mirror, only blast. While fighting with myself, when I broke down and scattered like a straw, a voice came from somewhere. If I had walked every step of my life and enjoyed the stares of every stop, maybe today it would not be my fate. And then I decided not to wait. I got courage to face this starless life, and I moved towards the light. And finally, I faced all my fears, and it helped me to face all my plight. Thank you, ma'am. You showed the insight and taught me how to fight. And a day came, I found my twilight. Very So, touching, Seema. I'm sure बहुत सिंपल पोम है, पर एक नहीं कई बच्चे हैं जो मेरे पास इसी स्टेजेस में आते हैं. उसमें सबसे पहली गलती ये है
I am very modern, so please don't judge me. I'm modern with my thoughts. Okay, I'm more progressive. I'm not that fake modern person who want liberty or who want any stupid thing on the name of modernity. एज अर्ली एज पॉसिबल 8 या 9 साल के बच्चे रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं, हैंडल नहीं होता, उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आती है, नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन माइंड है, व्हेन योर हार्ट इज इन पेन यू नीड अ शोल्डर, तो एक शोल्डर परे होता है, वो दूसरा शोल्डर की तरफ भागते, अगर वो शोल्डर नहीं मिलता तो सिगरेट, ड्रिंक्स, ड्रग्स, यू नो एनीथिंग विच दे फील उनको बचा सके उसमें वो इन्वॉल्व होते हैं। जब वो उसमें से नहीं निकलते फिर वो फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा एडिक्शंस की तरफ चले जाते हैं। अमूनन ऐसे बच्चे मेरे पास 17 से लेके 25 साल की एज के होते हैं, टोटली ब्रोकन, टोटली शेटर्ड। अगर आप मुझसे पूछें कि इसका एक रीजन क्या है, दे हैव मिस्ड द लाइफ स्टेजेस एक्चुअली। So I believe that you should have a boyfriend, you should have a girlfriend, date somebody, you can drink also, but at least let that level come when you are capable enough. हम 18 साल से कम बच्चे को ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं देते? ये थोड़ी कि उसको गाड़ी नहीं आती, हमें पता है कि जब वर्सन सिचुएशन आएगी वो मेच्योरिटी से इसको हैंडल नहीं कर पाए। So I think this poem is very close to my heart because मेरे पास जितने भी मिडना के थ्रू नर्चरिंग टीन प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो ज्यादातर बच्चों की यही स्टोरी है, मे बी समथिंग और द अदर। सो दिस एक्सट्रैक्ट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। Thank you so much, Seema ji. In interest of time, we would now be definitely jumping to the question received by the participant in the chat box. And as we have a few minutes left, we will not be able to take all the questions, but the best one and remaining questions we'll answer via either the email newsletter or through other ways after the session ends. So the very first question is, what do you know about being positive all the time that you wish you knew earlier when you were not the life coach to stay positive? Fortunately, somebody joined recently, Dr. Yogesh Sharma. Yes. Right question, right time. I'll be very brutally honest towards myself also. जो इंसान खुद जिस तकलीफ से गुजरा होता है उसको उसके सोल्यूशन ज्यादा अच्छी तरह से पता होते हैं। सो यस, मैं खुद बहुत सारी डिप्रेशन से, एंजाइटी से और अपने इमोशनल होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों से गिव अप भी किया है और गुजरी भी हूँ, बट मुझे लगता है कि आई डोंट हैव रिपेंट। somehow I believe they were needed actually, they were my life lessons, they were part of my journey, और अगर वो होते नहीं और मैं उनको फेस नहीं करती तो मेरा ख्याल ना तो मुझे एक्सपीरियंस आता, ना मैं सीमा द पाथ फाइंडर बन पाती और ना ही मैं एक किताब लिख पाती। और उसमें एडिंग टू इट, अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ अच्छा होना लिखा है तो अच्छे लोग कहीं ना कहीं से आपकी लाइफ में आ जाते हैं। तो मैंने बुक में भी मेंशन किया है, मेरे मेंटोर डॉक्टर योगेश शर्मा, ही गाइडेड मी अ लॉट। पॉजिटिव लोग आपकी जिंदगी में अगर हैं तो बहुत सारी पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। इसको सिंपैथेटिक इफेक्ट कह सकते हैं, इसको एम्पैथेटिक इफेक्ट कह सकते हैं, बट इट इज हाईली नीडेड। चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। सो मुझे कोई रिपेंट नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगी नहीं कि वो क्या सिचुएशन थी और मैं क्या कर सकती थी, बिकॉज आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग एंड एक्सेप्टिंग माई लाइफ द वे इट इज। So when you do that, when you surrender, then there is no repent and there is no going back also. Thank you for answering. We have many other questions also, but there are probably of couple one which we're not going to end up answering to. What we'll do is we will be noting down these questions and sharing it with you over the WhatsApp or via mail, and we can shoot out an email newsletter later for those questions to be answered. I want to respect everybody's time, and thank you for being here and presence of all of you. I would like to talk about how you can all help Seema. So one of the best way to do is to go on Amazon right now and order a copy of Two Sides of Mirror if you haven't done it already. And also stop, take a moment and think which person in your life
would you really recommend this book to and just purchase it for them also? You know, anyone who's dealing with the hard time, anxiety, or depression, or anyone whose birthday is coming up, this book will be a wonderful present. So, another thing that we can do for the author Seema is to leave a honest review on Amazon after reading a book and on Goodreads. One last thing I'm going to remind you guys is to please leave a congratulatory message for Seema in the chat bar. So take a moment to send her a message of love and congratulations. This is another good thing that we can do for her. But yes, definitely keep that love coming and help get that message out in the world by promoting this wonderful book. We really want to help and support Seema, and one of the best thing you can do is to write a good review if you love this book. In the closing remark, I would like you all to be here and Seema ma'am to end up the session with a beautiful note. Before we end up, I would like Yogesh Sharma to say a few words. It matters a lot to me. Please. Yogesh, you are not audible. Am I audible? Yes, Yes. yes, perfectly fine. हाँ देखिए, बोलो, मैं सबसे खत्म कर पहली रही हूँ बात कि सेशन आपने जो 5 मिनट बुक में। लिख दी, ये अपने आप में सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बुक को लिख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और स्पेशली इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे, ये आप सोच भी नहीं सकते आप कितने लोगों का भला कर रहे हो। सच में ये क्या है कि आप घर घर तक अपनी पहुंच बना रहे हो, और मैंने अभी अपने मैसेज में भी यही लिखा है कि प्लीज कीप इट अप। यहाँ पे रुकना नहीं है, ये एक शुरुआत है, बिल्कुल। और इसको इससे आगे लेके जाना है, और बहुत आगे लेके जाना है। आई विल रादर से यू कि आप मॉड्यूल्स लिखिए छोटे छोटे। जरूरी नहीं है कि हम एक बड़ी बुक लिखें, आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स, जो जो आपके लाइफ में क्लाइंट्स आए हैं, जैसी जैसी दिक्कतें आपने देखी हैं, अपने क्लाइंट्स में देखी हैं, सभी को इंडिविजुअली एड्रेस करके आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो। आप इनको एड्रेस करके आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स लिख सकते हो, पर इतना जरूर करिए कि लोगों के बीच में रहिए और अपने जो भी आपका ज्ञान है इसको बस शेयर करते रहिए। बिल्कुल सर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिनके बारे में आपने पूछा ही नहीं, पुष्पिंदर जी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आई एम अ वेरी टफ पर्सन टू हैंडल। दोज हु आर क्लोज टू मी दे नो आई एम परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ ह्यूमन। सो मेरे लिए जब किताब लिखने के बाद पब्लिकेशन को ढूंढने का टाइम था, तो यकीन कीजिए मैंने 6 महीने स्पेंड किए हैं, 6 months with different publication houses. I did a lot of meetings, and I congratulate Pushpinder for his patience actually. It's a great art, Pushpinder, and I've learned it from you, that you have handled a very tough person like me. Throughout, he was like so calm, because I sometimes get blah 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 that as Pushpinder ji aisa ho gaya, Pushpinder ji aisa ho gaya, aise nahi ho raha, वैसे नहीं हो रहा. And trust me, he's a very honest person, not just propaganda. मेरे दिल से वही बात निकलती है जो ट्रूथ है, अदरवाइज मैं बोल ही नहीं पाऊंगी. सो बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने मुझे गाइड किया, एंड पुष्पिंदर रियली ग्रेटफुल. थैंक यू, थैंक यू। पुष्पिंदर is our वही co-founder. yes ma'am, first of all congratulations for your book launch, and मैं सबको थैंक यू भी कहना चाहूंगा, जो भी सारे हमारे इनवाइटीज हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। विजडम वर्ड्स का जो विजन है वो यही है कि एक तो किताबों में इंटरेस्ट रहा है शुरू से, और तो हमने विजडम वर्ड्स की शुरुआत की, और एस्टेब्लिश्ड ऑथर को, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ऑथर को कोई भी एस्टेब्लिश्ड पब्लिशिंग कंपनी उसका पब्लिश कर रही है, बट हमारा एम है, हमारा मोटिव है कि न्यू बडिंग राइटर्स हैं, है ना, जो कुछ अपने अपने एरिया में कुछ अच्छा लिख रहे हैं और रीडर्स के लिए कुछ अच्छा पहुंचा पा रहे हैं। तो यह और हमारी वैल्यूज जो है वो यही है, ट्रांसपेरेंसी वैल्यू है हमारी ऑथर्स के साथ। और मैं बात करूं अगर हमारी इस बुक की टू साइड्स ऑफ मिरर की, नहीं तो हो रही हाँ, है। सीमा जी सही कह रहे हैं कि 6 मंथ पहले सीमा जी ने कांटेक्ट किया था विजडम वर्ड्स पब्लिशिंग के साथ, और तब से बातें चलती आ रही है। बहुत गलत दो बताया महीने था से, इसने। 2 या 3 महीने पहले हमने इस बुक पे काम चालू किया। जैसे रानी ने कहा कि टफ रहा होगा या नहीं रहा होगा, तो जैसे मैं इस बुक को हैंडल कर रहा था, तो मेरी और सीमा जी की नोक झोंक चलती रहती थी हर छोटी छोटी बात पे।
मैम वो एक ठीक फर्स्ट टाइम ऑथर, उनको भी कुछ चीजों का नहीं पता था, और मैं भी उनके तरफ से कुछ चीजें समझ रहा था कि हाँ ये ऑथर मतलब ये सीमा जी सही कह रही है, क्योंकि वो अपने रीडर बेस को जानती है। एंड ये मैं अनाउंस कर दूं कि हमने प्री ऑर्डर में हमने और सीमा जी ने मिलके 300 इस बुक्स का ऑर्डर हमने कस्टमर से लिए हैं। तो वो डिलीवर होने चालू हो गए हैं, कस्टमर को जल्दी, रीडर को बुक जल्दी मिलनी चालू हो जाएगी। और यही है, आगे का प्लान भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक, रीडर्स तक हम हमारी इस बुक को पहुंचाएं। फिक्शन नॉन फिक्शन की जो बात चल रही थी, वो ऐसा था कि स्टोरी तो मैम बता रही थी कि रियल स्टोरीज हैं, है ना, बट और किसी को भी कुछ नया सिखाने के लिए सबसे बेहतर तरीका स्टोरीज ही होता है ना। तो हमारी टीम में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये नॉन फिक्शन है या फिक्शन है। अब स्टोरीज रियल हैं, नॉन फिक्शन हो गई, है ना, बट कुछ कैरेक्टर इस तरीके से बनाने पड़े थे। टॉम का कैरेक्टर है इसमें, और कवर एडिटर के थ्रू हमारे पास एडिटर्स के थ्रू काम आया कवर, शायद पालिका जी ने कवर बनाया था। लेकिन जब सारी एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए, फिर उन सबको जोड़ करके कि किस तरीके से हमें एक रीडर के सामने वो चीज रखनी है, यही हमारा काम था, जो शायद मैं मानता हूं कि हमने अच्छे तरीके से किया है। और वंस अगेन सीमा जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हम और आगे कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक हम अपनी किताब को पहुंचाएं। सभी डॉक्टर पंकज, प्रियांशी, डॉक्टर योगेश, लीला, पलिका, जो भी मैं नाम यहाँ पढ़ पा रही हूँ, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आप सब बहुत बिजी पर्सनालिटीज हैं, आपने टाइम निकाला। अब एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने अपने इंस्टा पे, अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, और सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, प्लीज एक अच्छा सा शाउट आउट दीजिए, बिकॉज आपकी मदद के बिना इस बुक को लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत टफ है। और बहुत ही थोड़े से लोग हैं मेरी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, और मुझे खुशी है कि जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ती है वो मेरे साथ खड़े होते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि कोई भी अगर इस किताब को खरीदेगा, पढ़ेगा, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने लिखी है इसलिए नहीं, किसी ना किसी एक लाइन में, किसी ना किसी एक एक्सट्रैक्ट में उसको शायद ऐसा लगेगा कि शायद ये मेरी स्टोरी है। तो मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए हैं, कमलजीत सिंह, तो आज मैं इनको पकड़ सकती हूँ और कह सकती हूँ कि दो शब्द कहें, क्योंकि अमूनन ये बहुत शाय रहते हैं और कुछ ज्यादा कहते नहीं। तो प्लीज, क्योंकि इस किताब को यहाँ तक पहुंचाने में इनका बहुत ज्यादा हिस्सा है, कि इनकी सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। क्योंकि रात को जब ये देखते थे तो मैं बेड पे होती नहीं थी, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता था और मैं उठ के उसको लिख रही होती थी। और एक फुल टाइम इंस्टीट्यूशन के साथ एक बुक लिखना बिना फैमिली की सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं है। सो कमल, ऑल योर्स, प्लीज से समथिंग। सर अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए खुद को। मेरा इससे पहले मैं काट दूं। रहने दो, बोल, जरूरत नहीं है। देखो योगेश जी, आपको नहीं लगता लाइफ ऐसे ही बैलेंस है, एक जरूरत से ज्यादा बोलता है, एक बोलता ही नहीं। आप कमल जी को जितना बोलने के लिए बोलोगे, आज खाना बाहर से मंगवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अरे रोज ही खाना बाहर से आता सर। जब मेरी ड्यूटी होती है बनाने की, अगर काम वाली नहीं आती फिर मैं बनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो, ये हेल्प कम है क्या? बुक ऐसे थोड़ी लिखी जाती है। बिल्कुल, मैंने तो देखिए बड़ी ऑनेस्टली एक्सेप्ट किया है। नहीं सर, बहुत एफर्ट लगाइए। हस्बैंड जी, ये हेल्प कोई किसी की मतलब इसमें, ठीक है, जो एंड प्रोडक्ट निकलता है वो एफर्ट आपकी होती है। ठीक है, आप थोड़ा मॉरली सपोर्ट कर देते हो तो वो ही मेरे हिसाब से बहुत होता है। मतलब मेरी कोई एफर्ट इसमें नहीं है, सारी की सारी एफर्ट जो भी है वो लिखी की है। यू आर ग्रेट, यू आर एब्सोल्युटली ग्रेट। तो बहुत अच्छा काम करा है। मैं ज्यादा नहीं कहता होता, मैं अगर ज्यादा कहूंगा ना तो कल को ये बोले कहीं और भी और बोलो यार। चलिए मैम, thank you all. We are winding up the session as we want to respect everyone's time. And before that, I would congratulate ma'am again and would request you all to just spread the mouth of publicity for this book. And ma'am, you have, like, I'm very proud, and we as a publisher are very proud to publish your book. You are really amazing, and you have written such a wonderful book.
That's really insightful and it will be enjoyed by everyone. As we wind down, let's actually take everybody off the mute and give a Seema a big warm welcome. Congratulations and cheers. Thank you so much. All the questions that are unanswered will definitely be answered by the email newsletter or by any other means. चलिए once again बहुत बहुत बधाई and Thank keep Thank it you. up. you. Thank you. Have a great day. Wonderful weekend Thank ahead. you. Do Thank you read all this of book. your presence. Thank you so much. Thank you.